वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रो कंट्रोलर का स्टडी किया था, ठीक है, जो कि एम्बेडेड सिस्टम है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिस्टम ऑन चिप का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सिलेबस का मेन टॉपिक है सिस्टम ऑन चिप्स। सो इन दैट फर्स्ट पॉइंट इज इन बिटवीन लो एंड माइक्रो कंट्रोलर्स एंड फुल ब्लोन पीसी सूट, the SoC is there. SoC means system on chip. Like the microcontroller, these SoCs combine the processor and number of peripherals into a single chip, but usually have more capabilities. System on chip means what? The RAM and the ROM and the other uh, ICs are, that is on system on chip, means only in a single chip. This all the RAM and ROM are mounted, or we can increase its capacity, so that is system on chip. So the processor contains all these facilities like random access memory, read only memory, or the number of registers for temporary storage of data. These peripherals is onto a single chip. So this is the system on chip, and your microcontroller is also a SoC, that is system on chip. Next point, the processor usually range from few hundred megahertz to gigahertz, means the clock cycle required for the working of this processor will be from the megahertz towards the gigahertz. So that is the range of clock cycle or clock required for the processor. Next point, RAM measured in megabytes rather than kilobytes. So random access memory size is from kilobyte to the megabytes. So recently there is a development in the this random access memory, so the size of these memories are goes on increasing. So previously it is available in the kilobytes, then today's microcontroller, the size is in megabyte also. Next point, storage for SoC modules tends not to be included on the chip, with the SD card being a popular solution. So storage for this system on chip modules tends not to be included on the chip. Suppose system on chip इस टेक्निक में जो भी रैम रोम और अदर पेरिफेरल्स अगर अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो देयर इज़ ऑप्शन ऑफ एसडी कार्ड, ठीक है, तो हम उसमें एसडी कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं एंड विल सेव आवर डेटा इनटू दिस एसडी कार्ड. सो दैट फैसिलिटी इज़ आल्सो अवेलेबल. So in Raspberry Pi model, the SD card facility is available. We can put the SD card into the SD card slot, and we can save the extra data in this SD card. So it can be available in 512 MB, then 256 MB, 1 GB is there. So different memory SD cards capacity is available in this Raspberry Pi module. So same in case of microcontroller. Some microcontroller also support this SD card support, so the extra space will be available to the user for saving this program and other data. Next, the greater capabilities of SoC means that they need to some sort of operating system to marshal their resources. Means system on chip has a RAM and ROM, so the operating system is also installed in that. Next point, a wide selection of embedded operating system, both closed and open source, means embedded operating system has a open as well as closed source. इसका हमने ऑलरेडी डिटेल स्टडी किया है. दिस क्लोज सोर्स मीन्स इट इज़ अ license version, and open source code means it is freely available on the internet. So is available from both specialized embedded providers and big OS players such as Microsoft and Linux. So these open and closed source will be available by the
operating system players, that is OS players, means third party vendors is also there, and Microsoft and Linux, these multinational companies will also provide this operating system for embedded system as a open or closed source. So these are the some points regarding system on chip. तो नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग योर प्लेटफॉर्म, और इस पे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ यू चूज द प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग एंड IoT प्रोजेक्ट. ठीक है, तो प्लेटफॉर्म किस तरह से चूज़ करेंगे, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज है, उसका हम अभी डिटेल स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आपको इसमें लिस्ट करना है, ठीक है, कि कौन से क्राइटेरियाज होंगे, एंड वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो सबसे मेन पॉइंट उसमें फर्स्ट, द प्लेटफॉर्म यू चूज डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर ब्लेंड ऑफ प्राइस, परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज दैट सूट्स what you are trying to achieve. So the choosing of this platform will be depend on these three criteria. First is the price, second is the performance, and third is the capability. So these are the main three criteria for choosing your platform, that depends on how to you achieve your project output. Okay, so second point, and just because you settle on one solution, that doesn't mean somebody else will not have chosen a completely different set of option to solve the same problem. So start by choosing a platform to a prototype in. ठीक है, तो सबसे पहले इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी में या थिंग्स में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट के लिए हम चूज़ करेंगे पहले प्रोटोटाइप, मीन्स उसका एक सैम्पल प्रोजेक्ट बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोटाइप. सो फर्स्ट फॉर दैट प्रोटोटाइप वी चूज द प्लेटफॉर्म, सो दैट विल डिपेंड ऑन दिस मेन थ्री क्राइटेरिया, प्राइस, परफॉर्मेंस एंड इट्स कैपेबिलिटी. डिपेंडिंग ऑन दैट वी चूज द प्लेटफॉर्म, बिकॉज देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल फॉर दिस IoT. Some of the factors that you need to wait when deciding how to build your device. So there are some main criteria, depending on that we are decide how to build a device by using this IoT technology. So in that, first is the processor speed. So first choosing criteria is the processor speed. So in that you will see the processor speed or the clock speed of your processor tells you how fast it can process the individual instruction in the machine code for the program it's running. ठीक है, तो सबसे मेन फर्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया प्रोसेसर स्पीड. ठीक है, तो प्रोसेसर का स्पीड या उसका क्लॉक स्पीड वन एट द सेम थिंग. ठीक है, of your processor tells how fast it can process the individual instruction. मीन्स कितनी जल्दी जो हमने प्रोग्राम लिखा है या जो इंस्ट्रक्शंस हमने दिया है इन टर्म्स ऑफ दिस ऑपकोड एंड ऑपरेंड, ओके, दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज, तो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके कितनी जल्दी उसे प्रोसेस करता है, मीन्स प्रोग्राम इट्स रनिंग. ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द processor selection. Second one, naturally a faster processor speed means that it can execute instruction more quickly. ठीक है, तो जितना फास्ट होगा प्रोसेसर का स्पीड, उतनी जल्दी वो प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को क्या कर देगा, क्विकली एग्जीक्यूट कर देगा, एंड इट विल जनरेट द एप्रोप्रिएट आउटपुट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, you might also make a comparison based on millions of instruction per second, that is called as a MIPS. ठीक है, तो आप उसे चेक भी कर सकते हो, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में आप उसे प्रोवाइड करके आप चेक कर सकते हो कि कितनी टाइम में वो प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर रहा है. सो दैट विल डिनोट द प्रोसेसर स्पीड. ठीक है, तो उससे आपको प्रोसेसर का स्पीड पता चल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज some processor may lack hardware support for floating point calculation. So if code involves a lot of complicated mathematics, slower processor with hardware floating point support
could be faster than slightly higher performance processor without it. ठीक है, तो कुछ प्रोसेसर में थोड़ी कमी है कि मीन्स वो हार्डवेयर दैट हार्डवेयर डजंट सपोर्ट द फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स डेसिमल पॉइंट्स, ओके, और डेसिमल कैलकुलेशन और डेसिमल नंबर कैलकुलेशन. सो इफ़ द कोड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, अगर आपने जो कोड लिखा है या प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स यूज़ किया है या कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, सो स्लोअर स्पीड विद हार्डवेयर फ्लोटिंग पॉइंट सपोर्ट विल बी फास्टर देन स्लाइटली हायर परफॉर्मेंस प्रोसेसर. मीन्स इसमें उल्टा होगा कि जो स्लो प्रोसेसर है विद द हार्डवेयर दैट कैन बी अ फास्टर देन द हायर परफॉर्मेंस, मीन्स जिसका क्लॉक स्पीड या प्रोसेसर स्पीड हायर है, ठीक है, विदाउट इट. सो दैट इज़ द पॉइंट. नेक्स्ट, microcontrollers tend to be clocked at speed in 10 of megahertz, whereas SoCs runs at the hundreds of megahertz or possibly low gigahertz. तो माइक्रोकंट्रोलर जो वर्क करते हैं दैट इज़ द क्लॉक स्पीड ऑफ दिस माइक्रोकंट्रोलर इज़ 10 मेगाहर्ट्ज़. ठीक है, जनरली 10 मेगाहर्ट्ज़ और 12 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक स्पीड इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस माइक्रोकंट्रोलर्स, whereas system on chips, that is SoCs, runs at the hundreds of megahertz. मीन्स SoC मीन्स सिस्टम ऑफ चिप्स को अगर रन करना है तो दैट नीड्स द 100 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड और पॉसिबली लो टू द दिस गीगाहर्ट्ज. इफ़ योर प्रोजेक्ट डजंट रिक्वायर हेवी वेट प्रोसेसिंग देन सम सॉर्ट ऑफ माइक्रोकंट्रोलर विल बी फास्ट इनफ. अगर आप जो प्रोग्राम कर रहे हो या IoT प्रोजेक्ट कर रहे हो वो अगर ईजी है एंड दैट रिक्वायर्स low speed or low weight processing microcontroller also, so you choose that and that will be a fast enough. ठीक है, तो उसके लिए कोई heavy weight processing प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका सिंपल प्रोग्राम है so you choose a low weight processor. ठीक है, so that will save your cost also. Next point, if your device will crunching lots of data, for example processing video in real time, then you will be looking at the SoC platform. So these are the some points regarding this processor speed, which is the one of the criteria for choosing the platform. Then we'll see second criteria will be the RAM, that is the selection of RAM, that is random access memory, which is the one type of memory which is available on system on chip in a microcontroller as well as in microprocessor. So first point in RAM is RAM provides the working memory for the system. Okay, so this random access memory provides the your memory for the system, means it will be execute the program in real time, means that provides the space for the program. So that RAM, so this RAM also a main memory for the system. Second point, if you have more RAM you may able to do more things or have more flexibility over your choice of coding algorithm. ठीक है, तो जिस तरह से RAM का साइज इंक्रीज होते जाएगा सो आप मल्टीटास्किंग कर पाओगे ऑन योर कंप्यूटर. ओके, सो दैट प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ओवर योर चॉइस ऑफ कोडिंग एल्गोरिदम. ठीक है, आप कोडिंग के लिए कौन सा एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो. इफ़ यू इंक्रीज द दिस रैम साइज सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द दिस कोडिंग एल्गोरिदम. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव एग्जैक्ट गाइडलाइंस टू अमाउंट ऑफ रैम यू विल नीड एज इट विल वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. ठीक है, तो कितने साइज़ का रैम आपको चूज़ करना है या जो भी माइक्रोकंट्रोलर आप यूज़ करोगे दैट कंटेंट्स व्हाट रैम साइज, सो दैट विल बी वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट. तो आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होगा. ठीक है, कि आपके प्रोजेक्ट में जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है. ठीक है, तो उसके लिए रैम का साइज़ क्या रिक्वायर्ड है. सो डिपेंडिंग ऑन दैट the size of RAM will be different from project to project. Next, however, microcontroller with less than 1 KB of RAM are unlikely to be
to be of interest. And if you want to run standard encryption protocol, you will need to at least 4 KB and preferably more. अगर आप 1 KB के नीचे जो रैम है वो माइक्रो कंट्रोलर आप सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू रन अ स्टैंडर्ड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल, अगर आप स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स उसमें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो दैट विल नीड एटलीस्ट 4 KB, ठीक है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 4 KB का है. सो दिस 1 KB RAM microcontroller is not appropriate for that, so you have to prefer more capacity of RAMs in that case. For SoC board, particularly if you plan to run Linux as an operating system, we recommended at least 256 MB, ठीक है, अगर आप Linux operating system पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, for SoC that is system on chip boards, so at that condition at least 256 RAM will be needed, that is compulsory for this Linux operating system. So these are the different points regarding the capacity of this RAM for selection of your platform. Third criteria is the networking. In that, first point is how your device connects to the rest of world is a key consideration for Internet of Things products, ठीक है, मीन्स आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो IoT प्रोजेक्ट में, हाउ दैट कैन बी कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, that is a key consideration for the that is the main point regarding this Internet of Things products. So wired Ethernet is often the simplest for the user. Generally plug and play is there and the cheapest, but it requires the physical cable, ठीक है. तो जैसे वाईफाई या वायर्ड इथरनेट में आप सिंपली फिजिकली वायर कनेक्ट करके भी इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इथरनेट, ठीक है. तो दैट इज़ द चीपेस्ट वे, बट इट रिक्वायर्स द फिजिकल केबल, ठीक है. तो जिस तरह से आप जो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली लैन केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, फॉर एक्सेसिंग द और शेयरिंग द डेटा और फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, बट दैट रिक्वायर्स द physical wire between these two computers like that. So it is the simplest and cheapest way, but the disadvantages is that it requires the physical cable. Okay, so wireless solutions obviously avoid the requirement but introduce a more complicated configuration, ठीक है. तो इस पे एक solution है कि we use the wireless internet connectivity, okay, but it introduces the more complicated configuration because ये जो फिजिकल कनेक्शन है बिटवीन दिस टू मशीन्स और बाय फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट, सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे एंड द चीपेस्ट वे, बट व्हेन वी सी दिस वायरलेस सोल्यूशन, सो इट रिक्वायर्स द कॉम्प्लेक्स सर्किटरी एंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन इज देयर. नेक्स्ट पॉइंट, वाईफाई इज़ द मोस्ट वाइडली डेवलप्ड टू प्रोवाइड एन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्शन, ठीक है. तो उस पर सोल्यूशन है कि वो हम वाईफाई यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो वाईफाई यूज द वायरलेस कनेक्शन फॉर द इंटरनेट और फॉर द डेटा ट्रांसफर, सो बट इट कैन मोर एक्सपेंसिव एंड लेस ऑप्टिमाइज फॉर पावर कंजम्पशन दैन सम ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है. तो उसमें दो मेन डिसएडवांटेजेस है, एक तो एक्सपेंसिव है वाईफाई यूज़ करना एंड देन सेकंड इज इट्स पावर रिक्वायरमेंट इज आल्सो हाई. Next point, other short range wireless can offer a better power option, profiles or cost than Wi-Fi, but usually with the trade-off of lower bandwidth. Means other solutions are also available for short range wireless for less power consumption, but profiles or cost than Wi-Fi. There is of course the existing Bluetooth started as another possible choice, means we can use the Bluetooth to access the internet also and for data transfer, but it has also a disadvantage that it is limited in a range. So for a remote or outdoor deployment, the mobile phone networks can be used. So for remote or outdoor use, the mobile phone networks can also be used for accessing this internet.
So these are the different points regarding the networks for choosing the platform. Fourth selection criteria for choosing platform is the USB. So USB is called as a universal serial bus. So in that first point is, if your device can reply on more powerful computer being nearby, then via a USB, that can be a easy way to provide both power and networking. ठीक है. So USB can also provide the power and also provide a networking support. मीन्स USB के ज़रिए हम सिंपली मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. मीन्स दैट कैन प्रोवाइड स पावर सपोर्ट ऑल्सो. दैट वोल्टेज इज फ्रॉम 0 to 5 volt, that is DC, that can be provided by this USB cable, that is the maximum voltage. And second, it provides the networking, means we can connect the pen drive as a USB, or we can connect our mobile phone by this USB cable to share the files and data from the mobile phone in the computer or in the laptop. So USB can be used for both power as well as networking solution. Second point, you can buy some of microcontrollers in version which include support for USB. Means you can connect these microcontroller kits like Arduino and a Raspberry Pi through this USB port to the computer, and you can save your code or program through this USB in a ROM of this Raspberry Pi or in Arduino boards. So USB is the most powerful solution for the connectivity in case of IoT. So instead of microcontroller presenting itself as a device, some can also act as a USB host. Okay, so these are the some points regarding this universal serial bus. Then next is the power consumption. So in power consumption, the first point is, faster processors are often more power hungry than slower ones. Means जो faster processor है, that they require the higher power. Okay, क्योंकि उनका processing speed ज़्यादा है, clock speed needed is also high, so they need more power for processing. But slower processor requires very less power consumption as their speed is also very low. Second point, for devices which might be a portable or rely on an unconventional power supply like battery or solar power, depending on where they are installed, power consumption may be an issue. ठीक है. तो जो पोर्टेबल डिवाइसेस है, सो दे यूज़ द अनकन्वेंशनल पावर सप्लाई लाइक बैटरीज. इस बैटरी से भी आप माइक्रोकंट्रोलर को पावर दे सकते हैं. ठीक है. और सोलर पावर इज ऑल्सो यूज फॉर सप्लाइंग द पावर, बट डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर इंस्टॉल. ठीक है. तो आप वो कहाँ इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, सराउंडिंग में. तो डिपेंडिंग ऑन दैट दिस पावर रिक्वायरमेंट विल बी अ वेरी. Means we can use the battery power, or we can use the power from the solar power, or from the main supply. ठीक है. So this power consumption may be an issue in that case. However, processor may be have a minimal power consumption in a sleep mode. ठीक है. तो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में फैसिलिटी होता है स्लीप मोड का. ठीक है. अगर वो आइडियल कंडीशन में, मीन्स अगर कोई प्रोसेसिंग वर्क उसमें नहीं हो रहा है, सो इन दैट केस द प्रोसेसर ऑफ योर कंप्यूटर और अ माइक्रो कंट्रोलर विल आल्सो गोज इनटू द स्लीप मोड, एंड इन स्लीप मोड द पावर कंजम्पशन में भी ऑप्टिमाइज. तो उसमें कम से कम पावर वो कंज्यूम करता है, सो दैट विल सेव द बैटरी लाइफ. ठीक है. जिस तरह से मोबाइल में भी जो प्रोसेसर यूज़ होता है, अगर मोबाइल में कुछ प्रोसेसिंग अगर हम नहीं कर रहे, सो इट विल गोज इनटू द स्लीप मोड टू सेव द battery. Next point, this mode may allow you to use the faster processor to quickly perform the operation and then return to the low power sleep. ठीक है. तो ये जनरली हेल्प करता है फास्टर प्रोसेसर में टू क्विकली परफॉर्म द ऑपरेशन. मीन्स जो भी प्रोसेसिंग उसमें हो रहा है, सो दैट प्रोसेसिंग इट प्रोसेस वेरी हाई स्पीड
and then after the processing that data it will return to the sleep mode as default. ठीक है, मीन्स जैसे ही उसमें जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो होने के बाद वो अपने आप स्लीप मोड में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, मीन्स इट विल consume the less power at that condition. So these are the some points regarding the power consumption. Next is interfacing with sensors and other circuitry. In that, in addition to the talking to the internet, your device need to interact with something else either. So first is sensor to gather the data अबाउट इट्स एनवायरनमेंट. ठीक है, मीन्स इंटरनेट जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इन योर IoT प्रोजेक्ट्स और इन IoT टेक्नोलॉजी, बट beside of that these devices need to interact with other devices also. So also sensor, so sensor का यूज हमें पता है कि सेंसर क्या करेगा, जो डेटा है एनवायरनमेंट का उसे क्या करेगा, वो गैदर करेगा एंड कन्वर्ट करेगा एक सुटेबल फॉर्म में, and that can be given to the microcontroller for the processing. Second one, motors, LEDs, screens and so on to provide the output data. तो जिस तरह से सेंसर एक्ट होता है एज अ इनपुट डिवाइस, तो उसी तरह से जो मोटर्स है, अगर आप सपोज आपके प्रोजेक्ट में मोटर रन करना है, दैट कैन बी ए स्टेपर मोटर और सीरीज मोटर. सो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस. और LEDs means simply LED will be on or off, or LED displays you are connecting, or screens like LCD screen you are connecting to display the text. So this provides the outputs, means it is the actuators. Okay. Third, you could connect to the circuitry through some sort of peripheral bus, that is SPI, means I2C being common ones. So this SPI and I2C are used for the IC to IC communication. ठीक है, because the microcontroller or processor or on the motherboard there are different ICs are connected, and that can be communicate with the your microprocessor. So same way in microcontroller also different ICs are connected, so the communication between these ICs can be happen by using this SPI and I2C interface. Next point, or through the ADC and DAC modules to read or write the varying voltage. Means ADC we have already studied, that is analog to digital converter, and DAC digital to analog converter. These are converters, means they can read and write the varying voltage. Means this ADC will convert the analog data which is in terms of voltage into the digital one, and in opposite DAC will convert the digital data that is in the form of ones and zeros into the suitable varying analog voltage. Next point, or through this generic GPIO, means general purpose input output pins, which is in your Raspberry Pi model, so which provide the digital on off inputs or outputs. ठीक है, तो जिसका हमने ऑलरेडी स्टडी किया है GPIO, तो टोटल 32 पिंस प्रोवाइड है GPIO में in Raspberry Pi. So this pin can be assigned as a input or as well as output, so that will depending on our project requirement, and that is in a software we can assign it as a input or output pins. So these are the some points regarding the interfacing with the sensor and other devices. Then next is 7, that is physical size and form factor. So in that first point is the continual improvement in manufacturing techniques for silicon chip, means that we have long passed to the point where the limiting factor in the size of chip is the amount of space required for all the transistor and components that makes up the circuitry on the silicon. ठीक है, so silicon or germanium chips are generally used for manufacturing this microprocessor or the components like transistor and MOSFETs, these and other components that can be use these silicon chips. So there is an improvement in this technology, and due to that the size of these chips and the amount of space required for all the transistor is goes on
डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जिस तरह से सिलिकॉन चिप टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उस हिसाब से जो ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप, ठीक है, तो उसका भी कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, एंड अल्टीमेटली जो साइज़ है, ठीक है, साइज ऑफ दिस चिप इज गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसी वजह से क्या बहुत सारे डिवाइस क्या हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो नाउ डेज द साइज इज गवर्न बाय द नंबर ऑफ कनेक्शन इट नीड्स टू मेक द सराउंडिंग कंपोनेंट्स ऑन द पीसीबी, ठीक है। तो जितना साइज कम होगा सर्किट का या हार्डवेयर का, सो दैट विल बी अ बेटर फॉर connection and also power requirement and surrounding components on the PCB. So size also matter. So the limit to the size that each connection can be reduced is then governed by the capabilities and tolerances of your manufacturing process. Next, some surface amount designs are big enough for home each PCBs that can be a hand solder, ठीक है। तो अगर PCB जो यूज़ कर रहे, if they are hand soldered, so at that time that size of that PCB will be a big, or design of that PCB will be a big enough. Other requires a professionally produced PCBs and accurate pickup and place machine to locate them correctly, ठीक है। तो PCB बनाने के लिए दो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, दे यूज़ द पिकअप एंड प्लेस मशीन, मीन्स उसमें पिकअप एंड प्लेस मशीन डायरेक्टली जो कंपोनेंट सिलेक्ट करता है फॉर मेकिंग अ पीसीबी, उसमें प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रोग्राम फीड करना है, तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट चूज़ करेगा एंड प्लेस करेगा पीसीबी पे, एंड इट विल ऑटोमेटिकली शोल्डर। सो दैट इज़ अ पिकअप एंड प्लेस मशीन दैट कैन बी यूज बाय द वेरियस कंपनीज, ठीक है। तो अगर मास प्रोडक्शन पीसीबी का करना है, सो दे यूज़ दिस पिकअप एंड प्लेस मशीन, ठीक है। दूसरा एक तरीका, अगर आप घर पे अगर पीसीबी यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड हैंड शोल्डर कर रहे हो, तो उसका साइज़ ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना एक्यूरेसी वहाँ पे नहीं मिल पाएगा हैंड शोल्डरिंग में। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस मेकिंग अ पीसीबी बाय यूजिंग दिस पिकअप प्लेस मशीन और home each PCBs. So due to this trade-off in size versus manufacturing complexity, many chip designs are available in number of different form factor known as the packages. So let us the circuitry designer choose the form that best suit in particular application. So these are the points regarding this physical size. Okay, so these are the total 7 criteria for choosing the platform for this IoT projects. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आर्डिनो का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।